Hello everyone, today we are discussing about the UGC NET paper 1 June 2025 most important 40 plus question. So let's start. Question number 1 में ऐसा फॉलोइंग दिया हुआ है ऐप एंड इसका जो यूज है ठीक है लैबस्टर वाज द वर्चुअल लैब एंड स्टिमुलेशंस A2 and Google Earth B3 virtual field trips and geographic explorations and Kahoot was an online quiz and assessment C4 and Poll Everywhere D1 real time polling ठीक है so option number 3 was the correct answer. Next question number 2 में ऐसा फॉलोइंग दिया हुआ है concept and meaning themes social contract and random organized subculture false consciousness belief that the people are devoted into blindly accepting the prevailing ideology and genuine is a class of the masses that share the distinct characteristics. D3. So option number 4 was the correct answer. Next, question number 3. Which of the following example of the positive transfer of learning? Okay, option number 1. Mastering algebra help in understanding the calculus was the correct answer. Next, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा फॉलोइंग दिया हुआ है स्वयंप्रभा चैनल एंड नेम चैनल 04 होगा सरस्वत A4 एंड चैनल 05 B3 प्रबंधन एंड चैनल 06 C2 वैदिक एंड चैनल 07 कौटिल्य D1 ठीक है सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट question number 5 a language teacher wants to create visually applying the presentation lesson with embodied the video interactive slides to enhance the online lessons. Which of the following tools are most appropriate or suitable in these purposes? Canva and book creators was the correct answer. A and C option number 4. Next, what among the following are correctly claiming the light of the assessment rubrics? ACE was the correct answer. Tool used to interpret the student on the basis of the some creations and ensure the transparency of fairness and making process, and it is innovative evaluation systems. So ACE was the correct answer. Option number 4. Next, question number 7. A 10 graded system that attempts to measure all verbal interaction in a classroom was decided was given by option number 4. A. Flanders was the correct answer. Next, question number 8. में ऐसा फॉलोइंग दिया हुआ है ठीक है टर्म एंड द फीचर्स लर्निंग डाइवर्सिटी A3 require cultural responsive teaching strategies and poor classroom ventilations. B4 negatively affected the concentration levels of the students and digital inequality. C2 worsens digital divide and teachers reluctance to innovate. D1 hinders utilization of the instructional facilities for the teacher. So option number 3 was the correct answer. Next, question number 9. Which of the following agreement or protocol mainly focus on the curbing of the global temperature rise? Option number 4 Paris Agreement was the correct answer. Next, question number 10. A teacher wants to create a collaboration learning environment where the students can prepare the assessment and help each other in share the document in real time. Which tool was the most suitable or appropriate in these purposes? Option number 2 Google Docs was the correct answer. यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा फॉलोइंग दिया हुआ है इंस्टीट्यूशंस और पोर्टल एंड डोमेन्स NCTE और टीचर्स एजुकेशन
A3 NCERT for school textbook, B4 and NAC C1 assessment or accreditation C1 and SWAYAM online education D2. So option number 3 was the correct answer. Next, question number 12. Cognition is situated cognition is an idea that thinking is located in the social physical context, not within the individual's mind. So option number 1 was the correct answer. Next, question number 13. Where the following statements are correct. Non-directive models of teaching nurtures the students rather than controlling the sequence of the learning. This statement was correct. And statement 2. Non-directive model of teaching. Teacher's role is the facilitator who is counseling the relationship with the student who guided their growth and development. So both are correct. Both statements are correct. Option number 1 was the correct answer. Next, question number 14. The organized bodies information stored in the memory that biases the way new information is interpreted, stored, and recall is known as. Option number 2. Schemes was the correct answer. Next question, question number 15. Which of the following example of the information development model? Option number 3. B, C, and D was the correct answer. Gaines information model and Jeremy Barner's model and Sachemann's model. So option number 3 was the correct answer. B, C, and D was the information development model. नेक्स्ट ये पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is not property of chi-square distribution? Option number 3. 3 times of the numbers of the degree freedom is equal to the variance was the correct answer. This is not property of chi-square distribution, ठीक है. नेक्स्ट ये बार डिटेल्स में आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. The mean and the standard deviation 75 observations and 45 and 10 respectively. If 2 is added each observation, the new mean and standard deviation will be option number 3 47 and 10 was the correct answer. यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Which ethical principle needs to be followed the research project dealing with the human beings? A and B was the correct answer. All participants must give their information consent and all participants should have adequate information on experiment in which they are participants. So A and B was the correct answer, option number 2. Next question number 19. The approach to study the reality and suggest that only knowledge gained through the experience and sense is acceptable refers to option number 3. Empiricism was the correct answer. The approach to study of the reality suggests that the only knowledge gained through the experience and sense is acceptable refers to the empiricism. So option number 3 was the correct answer. Next question number 20. Arrange the following correct order, ठीक है. एपीएस स्टाइल ऑफ जर्नल रेफरेंसिंग फर्स्ट में आएगा. साइटेशन इनिशियल ऑफ द ऑथर्स, उसके बाद आएगा टाइटल एंड ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द आर्टिकल एंड नेक्स्ट नेम ऑफ द जर्नल इटैलिक्स एंड नेक्स्ट DOI. So option number 3 was the correct answer. Next question number 21. The spearmans of
speak of the statistical distribution is represented by option number 1 kurtosis was the correct answer. Next, question number 22, your measurement should show which of the following validities if you want to generalize the result of your research to different population. Option number 3, external validity was the correct answer. Next, question number 23, qualitative research can be contrasted or constructed as a research strategy that usually, option number 1, entail deductive approach to the relationship between the theory and the research was the correct answer. नेक्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following development ability critical and logical thinking? A, B, D, E was the correct answer. Identify the problem, analyze the problem, select the relevant facts and participants, and draw the reference and conclusion. So option number 4 was the correct answer. Next, question number 26, identify the characteristics of open-ended question in survey research. Option number 2, B and C was the correct answer. They useful exploring the new ideas and they are time consuming and for the interviewers to the administrator or administer. So option number 2 was the correct answer, B and C. ठीक है. Next, which among the following is open-ended open source software for the data analysis? Option number 3, R was the correct answer. ठीक है. Next question, types of variables and example: nominal, brand of card, ordinal, socioeconomic status, interval, IQ score, and ratio income. So option number 2 was the correct answer, A2, B1, C4, and D3. Next, question number 29, which of the following are indicators used to assess the academic quality and impact of the researcher's work? A, C, D was the correct answer. Citation index, age index, and journal impact factor. So option number 2 was the correct answer, A, C, D. ठीक है. Next, question number 30, hearing the participants about the true nature of the study after the participants, especially if deceptions was involved, is called. Option number 3, debriefing was the correct answer. Hearing the participants about the true nature of the study after their participants or participations, especially if the description was involved, is called debriefing. Option number 3. Next, question number 31, according to David Holmes, the textual or behavioral qualities of the communication are determined by the architecture of the particular medium. Option number 1 was the correct answer. और डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एप्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन टर्म. इंटरव्यूज होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड mediation group communication. So option number 4 was the correct answer. Next, question number 33, identify the correct chronological order invention related to the mass communication. फर्स्ट में आएगा टेलीग्राफ, देन टेलीफोन, उसके बाद आएगा फोनोग्राफ, उसके बाद आएगा केबल टेलीविजन एंड लास्ट में आएगा MP3. तो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर, B, C, E, A एंड D. नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राफ आया था 1830s 40s पर. ठीक है. एंड टेलीफोन आया था 1876 पर.
1876 एंड फोनोग्राफ आया था 1877 एंड केबल टेलीविजन आया था 1940s 50s पर, ठीक है। एंड MP3 टेक्नोलॉजी आया था 1990s पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which of the following are the features of the broadcasting? The first, media age, one way communication, predisposed to state control, and an instrument of inequality. So B, D and E was the correct answer, option number 2. नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन, predisposed to state control and an instrument of inequality. Next question number 35, identify the chronological sequence in the communication devices. फर्स्ट में आएगा सी, मैग्नेटिक टेप, उसके बाद आएगा लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, उसके बाद आएगा ऑडियो कैसेट्स एंड देन आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, लास्ट में आएगा MP3. सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर, CBADE, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, मैग्नेटिक टेप आया था 1920s पर, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड आया था 1948 पर, ऑडियो कैसेट आया था 1960s पर, कॉम्पैक्ट डिस्क आया था 1980s पर एंड MP3 आया था 1990s पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द फीचर्स ऑफ द मीडिया ऑडियंस आर, ऑप्शन नंबर 2 A, B, C was the correct answer. Inaccurate media coverage may mislead the active audiences, and audiences consume the media content on their expectations of reward and infotainment can be deceptions. So option number 2 was the correct answer. Next question number 37, identify the correct chronological order. फर्स्ट में आएगा वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट, उसके बाद आएगा लॉन्च ऑफ द स्पेक्ट्रोनिक, उसके बाद आएगा अपीयरेंस ऑफ द सोशल नेटवर्क साइट, उसके बाद आएगा लॉन्च ऑफ द फेसबुक और उसके बाद लास्ट में आएगा ट्विटर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट आंसर, EDCBA. नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकता है, ठीक है। ट्विटर आया था 2006 मार्च पर आया था एंड फेसबुक 2004 एंड सोशल नेटवर्किंग साइट आया था 1997 एंड लॉन्च स्पेक्टिंग का आया था 1957 एंड ब्रॉडकास्ट आया था 1938, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट इन इंडिया नोन फॉर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 2 हिमवटका वाज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये कश्मीर में सिचुएटेड है, ठीक है, सॉरी ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, इट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट 2003. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, important characteristics of internet communication is, B, C, D was the correct answer. Multi-data networking, high fidelity, realism and sophisticated reciprocity. So option number 2 was the correct answer. Next question number 40, statement दिया हुआ है 2, ठीक है। According to the Buddhism, linguistic communication should be used to adopt the moral stance. This statement was correct. And the critical introspection not preferred by the Buddhist as per the interpersonal communication. This statement was incorrect. So option number 3 was the correct answer, ठीक है। Statement 1 was correct and statement 2 was incorrect.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को साजाना होगा, ठीक है। फर्स्ट में आएगा सी हॉलीवुड, उसके बाद आएगा ए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन कॉरपोरेशन, उसके बाद आएगा डी हे कोड, उसके बाद आएगा बी हिप हॉप म्यूजिक, उसके बाद आएगा ई प्रोपागेंडा मॉडल, कॉम्स्की प्रोपागेंडा मॉडल। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, हॉलीवुड आया था 1911 पर, ठीक है, 20th सेंचुरी। एंड फास्ट ब्रॉडकास्टिंग द कॉरपोरेशन बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन आया था 1922। एंड हे कोड आया था 1930s पर। एंड हिप हॉप म्यूजिक आया था 1970s पर। एंड कॉम्स्की प्रोपागेंडा मॉडल आया था 1988 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, when the older media find the new functions because their earlier functions are taken over by new technologies, the phenomena is known as, option number 1 functional displacement was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है। मॉडलिंग होगा A3 ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड सपोर्टिंग scaffolding, B1 helping the learners in starting and gradually heading the support, and articulation was give the word to their understanding of the process of and the content. So C4 and exploration was the search for the new information, verifying to accept the authentic knowledge, D2। So option number 2 was the correct answer। Next question number 44, which of the following essential component of the industrial smog, option number 4 was the correct answer। sulfur dioxide, particulate matter, fly ash and soot। So option number 4 was the correct answer, all of the above। Next question number 45, what is the correct sequence of the path from the initial to the final particulate matter exposures to the human? ऑप्शन नंबर 2 was correct answer। फर्स्ट में आएगा डी इनहेलेशन, उसके बाद आएगा ए लंग्स, उसके बाद आएगा सी ब्लड एंड लास्ट में आएगा सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गन्स। ऑप्शन नंबर 2 was correct answer। नेक्स्ट today's last question, arrange the following principal soil profile to top to the bottom, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट में आएगा ओ हॉराइजन डी, उसके बाद आएगा ए हॉराइजन, उसके बाद आएगा बी हॉराइजन बी, एंड उसके बाद आएगा सी हॉराइजन एंड लास्ट में आएगा आर हॉराइजन। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। डन। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर माय वीडियो। হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি।